All right, so are we ready now? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास ऑफ जायरो कंपास थोड़ा सा बच गया था. वी वर टॉकिंग अबाउट द एरर्स ऑफ द जायरो कंपास. Last class we talked about the alignment error, the transmission error, which are the fixed type of errors. वो हर हमेशा उतना error रहेगा. Alignment error क्या है? तो heading marker और कंपास कार्ड के बीच में एक सेकंड यार क्या आ रहा है? Misalignment between heading indicator and the lubber line and the fore and aft line, इन दोनों के बीच में अगर misalignment होगी तो प्रॉब्लम होगी. Naturally, if it is alignment error, तो ठीक से alignment किया जाए. So it can be eliminated, it can be reduced to zero also by proper and careful alignment of all the three: the heading indicator, the lubber line, and the fore and aft line. All should be in the same line. Transmission error, that was the gyro compass is separate और उससे रिपीटर में हम अलग अलग जगह उसकी वैल्यूज लेके जाते हैं, उसका डिस्प्ले लेके जाते हैं, डिस्प्ले या इंडिकेशन लेके जाते हैं इन द रिपीटर्स. What you are steering is looking at the repeaters only. You are not directly looking at the gyro compass. So they should be matched together. कुछ लिमिटेशंस होती है. इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेज रहे हैं, उस तरफ को जा रहा है, वहां पे रिपीटर दिखा रहा है वही डेटा जो gyro compass में है. So there can be little bit of difference between the two. And this, since it is an electronic problem, so electronic solution also. What is called multi-pulse transmission, number of data transmitted, number of pulses transmitted to the repeaters are increased to something like 200 per minute. So the repeaters are getting constant input from the gyro compass. The gyro compass abhi kahan hai, abhi kahan hai, abhi kahan hai. Same way it is transferred to the repeaters. Coming to the dynamic or variable errors, anyone? What errors we talked about? Latitude error. Latitude error. We have already discussed latitude error. This latitude error is the result of damping. Basically, damping के साथ related है. We know that there are two kinds of gyro compasses, top heavy और bottom heavy. टॉप हेवी में एक तो होता है रोटेशन, इधर से उधर अलग अलग घूमती है. टॉप हेवी में काउंटर क्लॉकवाइज, बॉटम हेवी में क्लॉकवाइज. दोनों में डैम्पिंग भी अलग अलग होती है. टॉप हेवी में डैम्पिंग इन टिल्ट होता है, बॉटम हेवी में डैम्पिंग इन एजिमथ. दोनों का सेटलिंग जो है दैट इज डिफरेंट. डैम्पिंग इन टिल्ट gyro compasses have an azimuth error easterly and upwards. Right now horizontal and pointing to north. If you go to latitudes in northern hemisphere, it will be settling away from the meridian, east and top. Positive tilt के साथ easterly deviation error. Similarly, if you go to the southern hemisphere, it is westerly and below the horizon, into the horizon. जमीन के नीचे देख रहा होगा, जमीन में वहां आसमान देखता है, वहां जमीन देखता है. Since it is damping का problem, so we call it damping error. Since it is associated with the latitude, we call it latitude error. Since it is a problem of settling, the compass settles at a given position, we call it settling error. And there was a formula that I had given you for this. Sine azimuth is equal to k tan latitude. That means it is a function of tangent of the latitude. Tan latitude, tan for tangent. So it is also called tangent error. The question may be asked in the exam where it is asking damping error,
or maybe tangent error, maybe settling error. Anything can be asked and the answer is same. It is related to gyro compasses which are damped in tilt. We will take a look at the board for why it is settling away from the azimuth, from the meridian, why there is error. The gyro compasses damped in azimuth, they settle on the equator like this. Going north, it will settle like this. That means it is always pointing to meridian, but जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाते हैं वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ सेटल होता है. एजिमथ एरर नहीं आता, ईस्ट वेस्ट नहीं होता, अप एंड डाउन होता है. साउथ में जाएंगे तो नीचे जमीन को देखेगा, इक्वेटर पे बराबर हॉरिजॉन्टल देखेगा, और नॉर्थ में जाएंगे तो ऊपर को देखेगा. So these are latitude errors. A short explanation of why azimuth error happens. On the equator, a gyro compass, is it going to have any kind of drifting or tilting on equator? No, sir. No, sir. So no problem, it will remain pointing to north. Very good. But जैसे जैसे नॉर्थ में जाएंगे, जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा तो साइन लैटिट्यूड के हिसाब से ड्रिफ्टिंग होगी. करेक्ट? Yes. Sir. Drifting is equal to 15 degree sin latitude per hour. Correct? Yes. Yes. तो जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर जाएंगे ड्रिफ्टिंग शुरू होगी. अब इस ड्रिफ्टिंग को रोकने के लिए मुझको कंट्रोल प्रिसिशन वापस चाहिए या नहीं? Yes, sir. कंट्रोल ड्रिफ्टिंग को हम कंट्रोल प्रिसिशन से ही वापस करते हैं ना. इधर को जा रही है उसको वापस धकेलते हैं कि नहीं मेरिडियन इस तरफ को है, चलो. So to counter the drifting we require control precision. लेकिन कंट्रोल प्रिसिशन कहां से मिलेगी? वो मिलेगी टिल्टिंग से. टिल्ट होगा तो वेट लगेगा, टॉर्क लगेगी तो प्रिसिशन होएगा. सही बात? Yes, सही है sir. ना? That is why as we go up in the latitude, जैसे जैसे ड्रिफ्टिंग बढ़ती है वैसे वैसे कंट्रोल प्रिसिशन भी ज्यादा चाहिए. ज्यादा लैटिट्यूड पे ज्यादा ड्रिफ्टिंग, सो वी रिक्वायर मोर प्रिसिशन, तो ज्यादा टिल्टिंग. और इसी के लिए जहां पे ड्रिफ्टिंग कंट्रोल प्रिसिशन बराबर होता है, टिल्टिंग डैम्पिंग प्रिसिशन से बराबर होता है, वहीं पे जाके टिक जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है. ड्रिफ्टिंग को कंट्रोल प्रिसिशन काउंटर करता है, टिल्टिंग को डैम्पिंग प्रिसिशन काउंटर करता है. So if we go to the board, we can see this situation of settling. One second. Okay. Right. So we have already seen the settling curve, that if this is the meridian horizon, on the equator it is like this. जैसे नॉर्थ में लैटिट्यूड बढ़ता है या साउथ में लैटिट्यूड बढ़ता है तो इसका सेटलिंग कर्व ऐसे होता है. That we have already seen, that upwards and easterly error in the north hemisphere, downwards and westerly error in south hemisphere. सर स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही ब्लर आ रहा है? है. हाँ ठीक है. Okay. So let us say that it is settling here. It is settling here because as we have gone up in the latitude, there is drifting.
ड्रिफ्टिंग को काउंटर करने के लिए मुझको कंट्रोल प्रिसिशन चाहिए, लेकिन कंट्रोल प्रिसिशन कैसे मिलता है? जब टिल्टिंग होती है, टिल्टिंग होगा तो टॉर्क लगेगी, तो मुझको कंट्रोल प्रिसिशन मिलेगा। और टिल्टिंग के साथ हमने डैम्पिंग भी किया हुआ है, डैम्पिंग एंड टिल्ट, सो पीडी भी लगेगा। तो सेटलिंग के समय चारों फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम होते हैं। ड्रिफ्टिंग को पीसी काउंटर करता है, टीजी को पीडी काउंटर करता है, यहाँ पे सेटल हो जाता है। जब हम नीचे जाते हैं यहाँ पे, तो ड्रिफ्टिंग कम हो रही है। ड्रिफ्टिंग के लिए कंट्रोल प्रिसिशन भी कम चाहिए, कंट्रोल प्रिसिशन कम चाहिए तो उसके लिए टिल्टिंग भी कम चाहिए, और कंट्रोल प्रिसिशन के साथ पीडी भी थोड़ा कम चाहिए, तो यहाँ पे सेटल होता है एजिमुथ एरर इतना। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है, वैसे वैसे टिल्टिंग भी बढ़ती है, और इन दोनों के साथ पीसी और पीडी भी बढ़ता है। सो दिस इज द सेटलिंग situation of the gyro compass for the compasses which are damped in tilt. Understood? Any questions? Any questions? No, sir. Next one is steaming error. Steaming error is also known as LCS error. Why? Because when we are steaming, what we are doing? We are steaming at some place, some latitude. We are doing some kind of course, and we are doing some kind of speed. So LCS is about course and speed that we are doing at a given latitude. That means तीनों का factor होता है. Remember that dynamic errors are due to motion of the ship or location of the ship. When the ship is sailing, all this kind of errors will happen. Changes from place to place, direction to direction, speed to speed. So, how do we see this steaming error? क्या होता है? Last class में जाते जाते हमने बात किया था कि the gyro compass which is made in a perfect manner is settling down pointing to north all the time. As it is settled down pointing to north, actually what is she doing is that she is experiencing a motion, peripheral motion of the earth. Periphery में घूम रही है. So right now, sitting at your home, you are moving at the speed of 67,000 kilometers per hour. Right now, as you are sitting at your table, if somebody is out there in the space and watching you, they will see you moving at the speed of 67,000 kilometers per hour. That's the peripheral speed of the earth. No, not peripheral. Not peripheral. Peripheral is about 24 hours में 360 degrees. We know 1 degree is equal to 60 miles. Correct? Yes, sir. So 15 degrees is equal to how much? 900. 900. So that is the 900 knots is the speed you are moving on the surface of the earth. The earth is moving in its orbit at 67,000 kilometers around the sun. So here
this is settling down perpendicular to the motion experienced by the gyro compass. So if everything is fine, the gyro compass settles down perpendicular to the motion experienced by it, where it is now moving in this direction. अगर इसको हम छोटे में करके देखें, so let us say 900 भी याद रखिएगा. Peripheral speed of the earth को अगर हम एक वेक्टर से दिखाएं, which is 900 nautical miles, but this will be at the equator. At the equator is 900, but the same degrees when it is covered here, here, here. This distance and this distance, will they be same? No, sir. No. So at 0 degree, it is maximum, which is 900 miles. At this place, यहाँ तो कोई हिलेगा ही नहीं पोल पे, अपनी जगह पे खाली ऐसे ऐसे से घूमेगा. Yes, So sir. at 90 degree, it is 0. So from maximum to 0 on the equator, on the latitudes. So by what function it is changing? At 0 degree maximum, at 90 degree 0. So which trigonometric function is giving you this? Cos. Very good. Cos. This is cos latitude. जहां यहाँ है तो 900 मिलेगा. Cos 0 is equal to 1. अगर यहाँ पे है तो cos latitude cos 40 degree. यहाँ पे अगर पोल पे चले जाएंगे तो cos 90 degree 0. So the peripheral speed of the earth is 900 cos latitude. The gyro compass is settling down like this, true north and also the gyro north. Both are showing the same thing, which is 90 degree to the motion of the earth. Now supposing the ship is here and she begins to do 20 knots of speed. तो 20 नॉट के स्पीड से नॉर्दर्ली कोर्स पे अगर चलेगी तो ये यहां पहुंचेगी या नहीं? 20 माइल्स 1 घंटे में यहां से यहां पहुंचेगी या नहीं? भाई सीधा चलेगा तो लैटिट्यूड में ऊपर चलेगा ना 20 माइल्स यहां से यहां. Yes, sir. But when she is moving, Earth is taking this in this direction. तो 1 घंटे में 15 डिग्री चला जाएगा यहाँ. That means she will actually reach here at this place. क्योंकि वो तो लैटिट्यूड पे चढ़ रही थी, but longitude तो इधर लिए जा रहा था. Longitude was moving, so she will reach here. Is that correct or not? One Yes. motion X, one motion Y. So is she reaching from A to B? लैटिट्यूड भी चेंज हो गया. ये 20 का स्पीड होगा. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. That means now the gyro compass of the ship is experiencing a relative resultant motion like this. Is that correct? Yes. Yes, sir. This is the peripheral speed, this is the speed of the ship, then this is the resultant, A to B. Then in that case, the gyro compass will think that I'm moving in this direction, so it will settle down perpendicular to this. Because the forces acting on the gyro compass, we have seen tilting, drifting, all was happening because of earth motion. Now the earth ke saath saath there is another motion added by the ship. So the net motion, the resultant motion is this. So
it will experience another kind of force more because of ship's speed, which is like this. So this will be pointing, settling down perpendicular to the resultant, and in doing so, there will be an error created, which is westerly error. Is that correct here? Is this correct here? Yes, sir. So in doing so, the error which is created is, let us say, theta. Is this the same theta which is created here? Yes, sir. Okay. So if we find out the value of this, we should be okay. We should be able to find out. अगर theta पता कर लिया तो error पता चल जाएगा. So in this triangle A, B, and C, you have to find out this theta, where AC is 900 cos lat, BC is V of the shape. Then can you find out the theta? Can you please? So tan theta is equal to V upon 900 cos lambda. Very good. Very good. Tan theta is equal to V by 900 cos latitude. So that's the answer. This theta is the streaming error. Tan as SE is equal to V by 900 cos lambda. And this SE will be what? What will be the error? It will be westerly, correct? Yes. Now suppose the ship is doing a southerly course. Then ship was here. She reaches at this place. She started here actually, but she ultimately reached here. So this is the resultant. Gyro will be settling 90° to the motion faced by it. So she will be settling at 90° to this. So this time error is Easterly. easterly. And the angle created will be same as it is here, theta. Correct? So again, you have same 90° angle, right angle triangle. You can find out the value of this theta. Again, the same, tan theta is equal to V by 900 cos latitude. Correct? So what is our understanding that we are taking? Ship will not go only north and south. She can go easterly. So this adds up. Any resultant change in direction if she is going easterly? No, sir. Only the speed is increased, but direction, the resultant direction has not changed. If she is going westerly, only the speed is reduced. 900 cos lat में से minus हो जाएगा v, इतना ही बच जाएगा, but no direction change, so no error. So streaming error is nil on east-west forces and maximum on north and south forces. We don't want to go too much into it, but this can be improvised. This formula for the streaming error can be improvised. Just seeing this diagram,
This is the formula for streaming error. We know tan theta is equal to B. B was what? Perpendicular by base A से B. So AB is equal to AD plus BD, correct? AB is equal to AD plus BD. So it is AD, this is BD, and this one is V cos cos, and this is V sin cos. Take your time and see if it is matching with your understanding, if you are okay with this. ये वैल्यू सही है या नहीं? understood. Or you want me to explain this particular part? सर एक्सप्लेन कर दिया. Come again? सर एक्सप्लेन कर दिया. It is okay ना? या अच्छा explain करने बोल रहे हो? एक्सप्लेन कर दिया सर. Okay. So write it down. Write down. Make this diagram और नीचे में tan theta का ये फॉर्मूला लिखो. फिर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. Make this diagram, then I explain. Finished? व्हाट्सएप नहीं सुनाई पड़ा. हो गया या नहीं हुआ? हो गया? Yes, sir. Okay. So here what we see, the ship is doing a northeasterly course. हमेशा तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो जाएगा नहीं, कार्डिनल पे तो जाएगा नहीं. So यहाँ कोई भी कोर्स हो सकती है. नॉर्थ ईस्ट में हमने एग्जांपल ले लिया. तो दिस इज 000 और ये कोर्स कर रही है. This is the course of the ship. The ship is going like this. So this is the course. Yes, sir. Okay. If that is the course, then 90 डिग्री में से माइनस करेंगे तो cos 90 माइनस cos कोर्स हो जाएगा या नहीं? हाँ जी. So now we have a triangle which is this 90 degree,
and this one is v. This, the speed she is doing is v. 1 घंटे में इतना दूर चलती है. तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने इस परपेंडिकुलर को यहां से यहां डाला और इसको बढ़ा दिया बेस को आगे तक. तो इन ट्रायंगल BCD, ठीक है. व्हाट इज BC? BC कैसे निकालेंगे? BC इज दिस वन, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. इनका रिलेशन क्या दिखाता है? sin 90 minus cos. This is the angle. Sin 90 minus cos is equal to BC by BC. Correct? सही है. But BC is equal to V. That means BC is equal to V sin 90 minus cos. Yes sir. V cos theta. Cos. That means this is V cos cos. So this BC is V cos cos. And similarly, we find out relationship between this and this. That will be giving you V cos 90 minus cos. That will become V sin cos. तो हमें इस 900 में ये प्लस कर देना है और परपेंडिकुलर ये P है हमारे पास. तो tan थीटा की वैल्यू निकल गई. सही है या नहीं? सही है. Okay. All clear? Yes. Okay, you don't have to probably write it, but just to understand कि अगर इस तरफ को जाएगी तो क्या होगा? This is 900 cos lat. The ship is going in this direction, southeasterly course. Resultant will be this. फिर से हम उसको रिजॉल्व करेंगे like this. तो फिर से हमारे पास ये आएगा V cos course और ये आएगा V sin course. The same way जो अभी पहले किया था बस वैसे ही आएगा. Again this is going to be what? 900 cos lat plus V sin course. ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया. So again tan theta is equal to V cos course divided by 900 cos lat plus V sin course. Difference क्या हो गया? This time the error is easterly. जो पहले वेस्टर्ली एरर था वो ईस्टर्ली एरर हो गया. So going south all the time the error is easterly, and going anything north, any course on the north side, it will always be like this resultant all the time. Error will be westerly. Agreed? Yes. Okay. One more thing, the sign here should be plus minus. Sometimes it is plus, sometimes it is minus. Now why is that? ऐसा क्यों हो गया? Sir, if we सर are दूसरी going साइड में towards कट जाएगा तो eastwards, then it will be plus, and if we are going westward, it will be minus. Bravo, bravo, bingo, bingo. Anything when you are going in this side, it will be always plus. Anything going on this side, it will be minus. Any course, westerly course,
all the time it will be minus. All the easterly courses it will be plus. That's all. तो दो चीजें हमने देखी क्या कि नॉर्थ में जाते हैं तो एरर वेस्टर्ली होता है, साउथ में जाते हैं तो ईस्टर्ली एरर होता है। यहाँ पे साइन में क्या, अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो प्लस और वेस्ट में जा रहे हैं वेस्टर्ली कोर्स है तो माइनस। आई थिंक वी आर गुड। Are we good? Yes, sir. Okay. Now the next one is the rolling error that you already know. The ship, when she is installed with the gyro compass, the reservoirs are like this. झटके से शिप इधर उधर होएगा तो लिक्विड चेंज होता है, तो टॉर्क लग जाती है, टॉर्क लगती है। So because of rolling, the swing is going to be like this, not always settled, but it will be swinging about the north. How have we rectified this problem, or how we have minimized this problem? क्या किया हमने? वेट लगा, लिक्विड बैलिस्टिक्स। वेट शिफ्ट होता है, टॉर्क तब लगती है जब लिक्विड जाता है, और उसको वो तो धीरे धीरे जाता है, टाइम लगता है, तो जब तक टाइम लग करके टॉर्क लगेगी तब तक जहाज सीधा। तो इसके पहले कि वो क्रिएट हो डेविएशंस, जहाज फिर से सीधी हो जाती है, तब तक इधर को जाने लगती है, इधर का लिक्विड इधर को जाएगा, जब तक जाने को शुरुआत होती है तब तक जहाज सीधी। So because of this sluggish motion of the liquid, we are minimizing this rolling error. ठीक है, लिस्ट में अगला क्या था? डायनेमिक एरर्स। कल लिखवाया था आपको बोर्ड पे, कल नहीं परसों। Sir, ballastic deflection error. Ballastic deflection. This happens when the ship is subjected to acceleration, either positive acceleration or negative acceleration. That means reducing speed. जब स्पीड 0 है, इंजन दे दिया आपने, बढ़नी शुरू हुई, तेजी से चलना शुरू हुआ जहाज, बढ़ना शुरू हुआ स्पीड, या फुल हेड जा रहे थे, हमने इंजन जेट स्लो कर दिया या स्टॉप कर दिया इंजन। हो सकता है कि हम रिवर्स भी दे दें इमरजेंसी सिचुएशन में भी। So in these cases what happens that the liquid in the pots, in the reservoirs, they have chance of shifting from one pot to the other due to acceleration. Now what we are trying to say, आप पानी लेके चाय लेके ट्रेन में खड़े हैं, ट्रेन चल रही है या ट्रेन रुकी है, अचानक ट्रेन चलना शुरू होता है, एक्सेलरेट करता है, क्या होगा पानी का और आपका भी? सडनली चलता है जहाज, मतलब ट्रेन, क्या होगा? Fall forward. Are we going to fall forward? फॉरवर्ड गिरेंगे, जहाज आगे चली तो इनर्शिया की वजह से पीछे हम लोग गिरेंगे, पीछे जाएंगे ना। तो जो लिक्विड है यहाँ वो मेरी तरफ गिरेगा या नहीं? Yes, sir. और मैं भी पीछे गिरूंगा। मान लो मैं दीवार से भी टिका हूं तो भी पानी जो है इसमें इस कप में चाय जो है वो मेरी तरफ गिरेगा, क्योंकि जहाज आगे गई तो इनर्शिया के चलते ये इधर को जाएगा। और वही ट्रेन चल रही थी और अचानक ब्रेक मारा तो ये सड़क के बाहर की तरफ जाएगा या नहीं? Yes, sir. जाएगा या नहीं? Now suppose the ship is going north, there are reservoirs. When the ship is accelerating towards north, will the liquid from here
try to pass through to this side. पीछे साउथ में आएगा या नहीं? अगर जहाज यूं जाएगी तो लिक्विड will flow from the forward end to the bottom rear end or not? When it is going like this, the liquid, because of inertia, will try to flow to this side. Yes, sir. And when the ship is reducing speed, झटका लग रहा है, तो यहाँ का लिक्विड सामने की तरफ जाएगा या नहीं? Yes, sir. During this time, a torque is created because of acceleration, and there is torque applied, there is precession. So the spin axis during that time will change to something else. जब सेटल हो जाएगी जहाज अपने स्पीड पे, तो वापस आकर के और प्रेशर टिक जाए, दोनों लिक्विड बराबर होएगा, and then it will remain as it is. So this is temporary deflection takes place due to change of speed, or also can happen because of change of heading. अगर लिक्विड यूं है, जहाज इधर को जाने लगे तो यहाँ वाला लिक्विड इधर को जाएगा, अगर इधर गई तो इधर को वापस जाएगा. So that ballistic deflection takes place either because of the change of speed, accelerating or deaccelerating, or changing course either eastward or westward. This is a temporary thing that happens during only the time of acceleration or change of course. Once the ship is settled on a course, settled on a speed, then this is finished. Then everything falls back in the place, and then gyro will be okay. So this is what is gyro compass and the errors. The 4 types of dynamic errors we talked about, 2 types of static error we talked about. With this, we are done with the gyro compass, excepting knowing the meaning of easterly error and westerly error. ये चीज क्या है? What is the impact of this easterly error or westerly error? We have 10 minutes. So in short, you have always, I think, heard many times, error west, gyro best. Error east, gyro least. ये आपने सुना है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Everybody understands the meaning of this, कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? आपने कंपास एरर्स के बारे में हाई और लो भी सुना होगा. Yes, sir. हाई इज बेस्ट. वहां जो बेस्ट बताया था दैट वाज हाई, और उस फ्रेज में जो लीस्ट था दैट वाज लो. तो व्हेन वी से error east, gyro least, the gyro is having a low error. Now why is that? What is the meaning of this low? Because when there is easterly deflection, the gyro will start reading less than the true. Supposing this is the gyro card, gyro का compass card, and there is rotor and spin axis. मान लीजिए ऐसा spin axis है, मैं ऐसे नहीं दिखा सकता आपको, या ऐसे नहीं दिखा सकता, इसमें आप देख नहीं पाएंगे. तो I am doing what? I am keeping it like this. So spin axis is like this, and it can swing to east or west. So the spin axis, right? The spin axis is here. The compass card is at this place, and the lubber line and indications are like this. So what are you reading right now? 0. 0. Now easterly error will be this side or this side?
अगर ईस्टर्ली एरर है, spin axis is changing over to the east side, so this side or this side, आपके तरफ से ईस्ट कौन सा पड़ेगा? राइट साइड हमारी सर राइट साइड, Right. Okay, आपका so now लेफ्ट you are साइड। reading like this. नहीं, मैं मुझको ऐसे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी तरफ से ऐसे करके दिखाएंगे तब हुए। This side is east, correct? यस सर, यस सर। So when it is changing to east, what is the reading on the gyro card? This is the view जिसमें आप रीडिंग देख रहे हैं, आपका हेडिंग इंडिकेटर। When no error, you are reading 000. Is that correct? When it goes east, what are you seeing? 355. लेस देन That द is less than the actual. True इधर में है, लेकिन error easterly हो गई, तो you are reading less. That is why it is called low. Error east, gyro least, compass least, low error. If there is westerly error, the compass has shifted to the west, then what are you reading right now? 005. 005. Is 005. it more than? Remember that you are going north, but error has developed. So now you are reading 005. Is it more than the true course? Yes, sir. So do we understand the concept of high and low, east and west, least and best? यस सर When the gyro is shifted to the east side, the reading of the gyro will be less than true. If it is shifted to the west, the gyro reading will be more than true. So let us say, for example, the ship is doing 35. Oh, okay. The ship is doing 280. True course 280. And there is a westerly error of 5 degrees. 5 degrees west is the error. True course 280. Westerly error 5 degrees. What is the compass reading? 285 285. That's what it is. The gyro will read more than the true. If there was 3 degrees easterly error, then 277 277. that's what the meaning of high and low is. Because when easterly, the reading becomes lower than the true, higher than the true when westerly. So simple as that. एकदम simple formula. ठीक है? Concept clear? Yes, sir. Thank you. Okay. So in the next class, we will take a look at, we have the, I think just after the lunch we can start a new topic, but इसको एक बार revise कर लेंगे, screen पे देख लेंगे इस topic को. Then the next topic, okay, before we go, what are the topics completed? Please list out. We have done Banvas, LRIT, AIS, AIS, PDR, EM log, Doppler log, log, GPS, GPS, gyro. gyro. Okay. So we have got autopilot, eco sounder remaining. Then we have Roti. Roti हो गया कि नहीं? Rate of turn indicator? नहीं sir. No, नहीं. sir. Okay, so rate of turn indicator is also remaining. Magnetic sir. Magnetic compass. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक सेक्सटेंट है जो सर पढ़ाएंगे, तिवारी सर. So we are left with this 4 of the topics. Since we have done a heavy topic, another heavy topic we'll be doing later on, maybe in the last. कुछ ideas लग जाएंगे इसके बारे में, हालांकि दोनों चीज अलग अलग है, एंड रिजल्ट एक ही होता है, कंपास ही है दोनों. So next we will be starting rate of turn indicator अगले क्लास में. Okay, All right. sir. चलो then. Bye bye. Thank you, sir. Bye bye. We meet after lunch. Thank you sir. Thank you. Bye bye. 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 Bye bye.
चलो बाय बाय Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय, साइनिंग ऑफ Thank you, sir. साइनिंग ऑफ